फर्स्ट ट्यूलिप बर्ड। ये हमारे घर के प्याज की तरह दिखते हैं। यहाँ पे एक गमला तक बिना सिंबल किए नहीं मिलता है। हम प्याज बोने जा रहे हैं। कौन सा वाला साइड ऊपर होता है, कौन सा वाला साइड नीचे रखना चाहिए? See, all my parts are here. You have also unboxed yours, right? तो अब शुरू करते हैं। Fair game. नहीं, मैंने तो अभी तक मैनुअल भी नहीं पढ़ी। It's not a competition. It is a competition. मैं तो स्कूल में बिल्कुल भोला वाला बच्चा था। ओह सॉरी, बीवी के साथ कंपटीशन करना इज अ बैड आइडिया। Hello everyone. Hello. So welcome to another vlog in our lovely house here in Netherlands. आज जैसा आप पीछे देख सकते हो, वैसे तो अभी 5 मिनट पहले ना लिटरली बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई थी। It's a lovely autumn morning here in Netherlands and आप जैसा देख सकते हैं, if you remember from the home tour video, ये सारे हमारे पेयर ट्रीज जो कि एकदम लश एंड ग्रीन होते थे, सारे पत्ते झड़ चुके हैं। आज जो है ये वीकेंड हम लोगों के लिए हाउस होल्ड चोर्स वाला वीकेंड है एंड one of the things, कोमल की शक्ल बन रही है already. No, it's not like that. It's just that सारे weekend household chores के लिए ही होते हैं, but it's fine. Exactly, that's the life here in Western world for you. So घर का सारा काम भी हमें ही करना पड़ता है। So आज के घर के काम के प्रायोरिटी लिस्ट में है गार्डनिंग And सफाई, if you can see this in my hand. आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली कि कैसे हमारा डेली लाइफ में हम अपने गार्डन की केयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, which obviously as you can see अभी पूरा it's a mess. मेरे बैकग्राउंड में एक प्यारा सा पेड़ है जो कि यूजुअली दिस टाइम ऑफ द ईयर में पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का सीजन शुरू हो गया है। पत्ते झड़ने की वजह से वो सारा यहाँ बैकयार्ड में आ जाता है। तो आज के एजेंडा में तो यार एक चीज तो पक्की है कि थोड़ी बहुत पत्तों की सफाई करनी है, बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग पार्ट जो आज का है वो है द फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू प्लांट समथिंग स्पेशल टुडे एंड दैट स्पेशल इज ट्यूलिप्स। अभी it's the prominent and the most effective time to plant tulips and कल हम shopping गए and we got some tulip buds. I got white buds and what color did you get? I think I got multicolor, I don't remember. Oh, it's purple. But Maybe ठीक है, purple. Yeah. And do you remember, it was a very fun experience on its own. I mean, living in India, यार मुझे तो पता ही नहीं था कि tulips इतने सस्ते भी आ सकते हैं। You don't get them there because of course there are so many taxes involved. But यहाँ पे you get the buds थोड़े सस्ते। हाँ, तो do you remember, we got these 10 buds, I guess, for 3.5 euros. Yes, we did. And 20 buds for 6 euros. So I think we paid 6 euros for these 20 buds. And 6 euro, अगर बात करें तो 6 euros is almost like 600 rupees में 20 tulips, which is not a bad deal at all. Only if they bloom, though. Only if they bloom, but जब हम flower market में थे ना यार, तो वो अंकल ने, the shopkeeper, deliberately made sure that we have confidence in these birds. He mentioned that तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो भी ये उगेंगे। तो भी ये उग जाएंगे। Yes, that's what he said. Yeah. Let's find out. Basically, हमें कुछ नहीं करना है. We had to find the appropriate soil for this, which I have in front of me, which is बल्कि कोमल उठा के देखना जरा, उठता है कि नहीं? आज का वर्कआउट हो जाएगा ये। I think I can. Holy shit. I can. Nice. No, it's working for me. See? तो यार ये कुछ 40 लीटर्स का सॉइल है मेरे पास आज एंड वी हैव 20 ट्यूलिप बर्ड्स एंड वी आल्सो हैव अनदर रियली ब्यूटीफुल कलरफुल फ्लावर व्हिच इज hydrangeas. If you can see हमारे hydrangeas literally मर चुके हैं इधर and there's another option if you want to plant you can use seeds या फिर आप इसको भी propagate करा सकते हो पानी में, but we are going the easier way because वो तो हमारे पास already available है, so we just bought some seeds. And another benefit of getting a new one is like we will get to experiment with some More really colors. new colors. ये काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि अपने hydrangeas को extend किया जाए and autumn is usually the time when the hydrangeas actually try to dry out their leaves and flowers as well and try to preserve their energy in their stems and roots so that they can bloom again during the next season. So what that means is hydrangea के लिए and for the tulip, this is the perfect season to plant them so that they can bloom in the upcoming spring season. So इसलिए हमने कहा कि this is high time यार. We should start doing it. Yes, of course. Without further ado, let's begin. पहले तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सफाई ही करी जाए क्योंकि यहाँ पे there is too many leaves. कोमल, can you help me out with the dustbin, please? जब तक कोमल डस्टबिन लाएगी and दूसरी broomstick लाएगी, मैं जल्दी से एक अपना हाथ मार देता हूँ. And if you can grab the gloves for both of us.
थैंक यू। यूजुअली ये एक्सरसाइज हमें ड्यूरिंग द लेट ऑटम सीजन हर साल ही ऑलमोस्ट करनी पड़ती है, बिकॉज एज आई मेंशन्ड देयर इज दिस ट्री बिहाइंड अस एंड हमें सैडली इनफ आई डोंट लाइक इट बट पत्ते झड़ते हैं, which kind of makes me sad because that's one life ending, but that makes way for another life beginning. Before we actually get to planting the buds, let's begin with at least clearing off this area for now. तो क्योंकि सफाई हो चुकी है पूरी, now let's get to the pots part. Komal, how heavy do you think this is? Come on, I just picked it up. यार, for being such big pots of this size, these are surprisingly very light. Very light. They are light. I am literally questioning the quality of these pots right now, but let's find out really quickly. Do the honors. Thank you. Yeah, they almost look like wood, but touching these, they feel very plasticky. But from the looks of it, I don't mind यार। दिखने में तो सुंदर ही लग रहे हैं ना। कोमल क्या कहती हो? They do look good. इसको भी assemble करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। They don't, yeah, they do look good. They do look good. Size wise तो काफी बड़े हैं। वेलकम टू दी NRI लाइफ यार। यहाँ पे एक गमला तक बिना असेंबल किए नहीं मिलता है। Damn, I miss India on these days. Even for a small thing as a gamla or a pot, you need to have a toolbox handy so that you can assemble it. Let's find out कि हमें actually इसको figure out करने में कितना time लगने वाला है। So I trust the lady in figuring out how this thing is going to be assembled. Pressure's on me. Yeah, pressure is literally on you. So meanwhile, मैं जरा जल्दी से ये दूसरे वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर देता हूँ and then let's see how things go. ये वाला पार्ट तो फिगर आउट कर लिया एंड छोटे वाले जो साइड्स थे, but this goes नीचे। मुझे बार बार मैनुअल की हेल्प लेनी पड़ रही है because it is a bit tedious to figure out on my own. लगता है ये गार्डनिंग वीडियो ना एक क्विक असेंबली कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाएगी बिटवीन मी एंड कोमल, एंड द कंपटीशन विल बी हु फिगर्स इट आउट बिफोर द अदर। एक बार जरा जल्दी से देख के आए कि जरा कॉम्पिटिटर की क्या प्रोग्रेस हुई है। थोड़ा बहुत यार, मैं तो स्कूल में बिल्कुल भोला भाला बच्चा था, बट बाय द टाइम आई गॉट इनटू कॉलेज शायद मैं बिगड़ गया एंड मैं जरा सामने वाले अपने दोस्त की मार्कशीट से कुछ आंसर्स कभी कभी कॉपी कर लेता था। आई डोंट रिकमेंड यू डू द सेम, बट जस्ट लेटिंग यू नो। तो जरा उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक बार देख के आए कि हमारे सामने वाले बैठे हुए कैंडिडेट की मार्कशीट पे क्या लिखा है। I think I'll have to take this one out. ये इसके अंदर नहीं फिट होना था। So basically there is a long side and then there is a not so long side, and one of them is a base, and then there are 4 pieces to join them up together like these. But मुझे 4 नहीं मिले। I just had 3 of them. एक वहाँ पड़ा है। So that's third. Oh, I think yeah. एक You have 4th. The game is on. I married a very competitive guy. You married a really nice guy who gave you an advantage of 10 minutes before him. 10 seconds sure. Unboxing भी की है। तो ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं फिर। It's just unbox. दोनों का unbox हो गया है। Let's figure it out साथ में। See, all my parts are here. You have also unboxed yours, right? तो अब शुरू करते हैं। Fair game. नहीं, मैंने तो अभी तक मैनुअल भी नहीं पढ़ी। It's not a competition. It is a competition. Now, just It's not a competition anymore, read guys. a manual. Teamwork all the way. You started this competition now. अब चलो करते हैं। Teamwork all the way. लो manual पढ़ लो। I think बीवी के साथ competition करना is a bad idea. Let's be on the same team for now. This is the size of the pot, guys. दिखने में इसका बाहर से कितना प्यारा शेप आ रहा है, कितना प्यारा टेक्सचर ऑन द पॉट इटसेल्फ, राइट? जब मैंने इसको अमेज़न पे देखा था, आई डिडंट रियलाइज कि यार ये इतना हल्का होने वाला है। आई एम अमेज्ड। नाउ दैट
the assembly of the pot is done, we go to our next step, and the next step is The real potting of the seeds and bulbs. but ये जो next step अभी आने वाला है ये थोड़ा सा अगली होने वाला है, क्योंकि अभी we'll get our hands and probably our clothes dirty, क्योंकि हमें अभी डालना है इसको अच्छे से, इसमें इस गमले में अच्छे से हमें मिट्टी मिलानी है. Time to get really dirty. मुझे लगता है I'm not very sure if the soil will be enough for these two pots, क्योंकि हमारे pots काफी huge है. Let's figure out. Maybe मुझे एक और सुपरमार्केट की ट्रिप लगेगी to bring out extra soil, or maybe not. Let's find out. Yeah, so I'm not sure how we are going to plant. एक में tulips करेंगे guys, and एक में hydrangea. That was our initial plan, but depending on the amount of soil, we will decide it right away. तो परिचय अभी soil डाल रहे हैं pot में. हमारा initial plan was we'll plant the tulips in one pot and hydrangea in the other, but looks like हमें soil की कमी होने वाली है. कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है. I actually, let me check. I may have some extra soil in reserve in my storage room. Let me find it out and bring it. Looks like I do, but ये भी उतना खास ज़्यादा नहीं है. अभी इतने से ही काम चलाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे बात बनती है कि नहीं बनती है. I think हमें पूरा fill तो नहीं करना है. So we are discussing right now कि हमें ये पूरा fill करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, and I think क्योंकि हमारे पास soil की shortage है, we might just stick to only and only fill it as much as it's required right now. एक थैला तो खाली हो गया है guys. See, the hydrangeas they don't require a lot of soil, क्योंकि उसको बस soil के surface पे डालना होता है and you have to spray some water on it and वो अपना roots पकड़ लेता है. But for the tulips, I'm not very sure कि इसको कितना soil लगता है. Maybe इतना ज़्यादा depth वाला गम, such huge pots. Soil number 2 is officially gone as well. Let me give you a closer look at the amount of soil that exists in both of these pots. ये वाले pot का तो हाल अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, क्योंकि it's almost halfway through. But इस वाले का बेचारे का उतना भरना नहीं हो पाया. We were just discussing कि हमारा soil का quantity को जैसा देख रहे हैं, maybe if tulips उगेंगे तो वो थोड़े नीचे रह जाएंगे, but we always have the option of repotting them. तो we will just give this one a shot for now. शुरुआत करते हैं अपने ट्यूलिप्स से. This is how the tulip bulbs look like. बिल्कुल प्याज की तरह. ये हमारे घर के प्याज की तरह दिखते हैं. So it's another way of saying यार हम प्याज बोने जा रहे हैं. And there goes our first tulip bud. Yay! And the second one. It actually makes me wonder, did we actually check कि कौन सा वाला साइड ऊपर होता है, कौन सा वाला साइड नीचे रखना चाहिए? I think bulbs जिस तरह से structured है, उसको नीचे ही रखा जाता है. I've watched some videos. We did verify this, and in bulbs को क्या करना होता है? You need to make sure that the pointed side is facing upwards, while this round thingy faces down, because इसमें से roots की growth होती है and इससे stem निकलता है बाहर. I don't know about you who are watching this, but for me this is very satisfying. इतने प्यार से एक soft से soil के अंदर ये बिल्कुल ही gently you push it down and ये बड़े प्यार से ना it just gradually slides down. करके मजा आ रहा है यार. There is some sense of satisfaction that I am getting by this activity. No wonder why people say कि gardening भी ना थोड़ी therapeutic होती है. Okay, now comes the next step where we will be just gently covering these tulip buds with some soil layer. I'm only concerned if this much height would be enough for the roots to grow around or not. ये तो वक्त ही बताएगा, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट वीक जाके एक और बैच ऑफ सॉइल ले लूंगा, खरीद लाऊंगा, एंड देन वी कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट वी इंक्रीज द लेवल ऑफ सॉइल इन हियर टू गिव मोर रूम ऑफ ग्रोथ टू द बड्स. चलो, द ट्यूलिप बड मिशन इज डन. अब आती है बारी जल्दी से हाइड्रांजिया की. You don't have to do a lot. बस मैं सॉइल को थोड़ा अच्छे से मिक्स कर दे रही
So apparently if you ever go Bloemen shopping in Netherlands, Bloemen stands for flowers, so apparently if you ever go to flower shopping in Netherlands, this is the kind of cute paper box in which you'll be getting your hydrangea seeds. And interesting thing to notice here at this point is कि यार इसके अंदर seeds नहीं है. This is almost like a mix of soil of some sort. So I was actually confused about this and I asked with Komal and we did a little bit of research and then we found out it's a very fine mix of hydrangea seeds which usually comes this way in the form of a mix with the soil. तो इसको बस ज़्यादा effort नहीं मारना है और नहीं हम मारने वाले हैं. इसको बस हम जल्दी से अपने पॉट के ऊपर अपनी लेयर ऑफ सॉइल के ऊपर एक डाल देंगे एंड उसके बाद हल्का से इसको पानी दे देंगे. दैट्स इट. और फिर भगवान भरोसे देखी जाएगी जो होएगी. It does have a very sandy texture. Almost like ऐसा लग रहा है देख के कि धूल किसी ने पकड़ ली है एंड डाल दिया. Yeah. You can actually sense this like rising in the air as well. थोड़ा धूल टाइप का हो गया ये पूरा. I've never seen a flower mix that comes in this form. Next बारी आती है थोड़ा पानी डालने की. Oops, sorry. पानी का भी ऐसा है कि you don't have to put a lot of water. You just have to sprinkle some and that's what we are going to do. इसको ना ज़्यादा भीगा करना है ना ज़्यादा सूखा रखना है. Somewhere in between. So we are sprinkling and we are not putting water. We're not pouring water but we are just sprinkling. And with this we are done. So this pot has our tulips in white and purple colors and this pot has hydrangea and it was probably the best time to plant them. We will have to wait for a couple of months to see if they really grow. Usually blooming season comes in April. तो फिर अप्रैल में जाके पता लगेगा कि इस पूरी एक्सरसाइज का आउटकम क्या निकलता है. एंड वी आर सुपर हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड. कांट वेट फॉर अप्रैल टू कम इन. क्या ये फ्लावर सीड्स एक्चुअली ओके मटेरियलाइज होके हमारे गार्डन में एक अलग ही रौनक ला पाते हैं कि नहीं, ये तो हमें भी नहीं पता. ये वक्त बताएगा. आई गेस इफ यू हियर बैक ऑन दिस चैनल इन स्प्रिंग सीजन नेक्स्ट ईयर आई माइट हैव सम गुड न्यूज टू शेयर. लेट्स फाइंड आउट. सो अंटिल देन लेट्स जस्ट वेट एंड सी वेयर दिस गोज. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Doei!